अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय शऊर। अब इस वीडियो में हम इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। BT101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड evolution-1 हम ये पढ़ रहे हैं और उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर है 41 बेनिफिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका क्विज ले लेते हैं। Heat is radiated into space in terms of infrared radiation. Which is true about the radiation of sunlight. Stays in the air in the form of greenhouse gases. Finches and mice are examples of carnivores. All are correct, thanks Lord। हम चलते हैं आगे। हम अपनी वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। We studied structure and composition of atmosphere, and we studied different layers of atmosphere. So we have seen that atmosphere is responsible for sustaining the life on this planet Earth. और इसके बगैर अर्थ पर जितनी भी लाइफ सर्वाइव करी है, माइक्रोब से लेकर एनिमल्स तक और ह्यूमंस तक, वो सर्वाइव करने के काबिल नहीं रहेंगे if atmosphere is diminished. So atmosphere is a key element which is responsible for survival of life on the planet, and without this atmosphere, the situation on this planet, it would be just like Moon and Mars, which are just left barren because their atmosphere is diminished. So we see कि इसके कितने कौन-कौन से ऐसे benefits हैं जो कि atmosphere हमारी अर्थ को और लाइफ को प्रोवाइड करी है। So the first and important benefit is temperature. Atmosphere is maintaining earth temperature. So we know कि सोलर रेडिएशंस जो कि सन से आ रही हैं, they are bringing the heat, और ये हीट अर्थ से स्ट्राइक करने के बाद रेडिएट बैक हो जाती है। बट a percentage or a small proportion of this heat is entrapped by the gases, by the molecules which are present in atmosphere. So they absorb that heat energy from the sunlight, and that absorbed heat is conducted from one molecule to the other molecule, and it is evenly distributed because of the mixing of gases in atmosphere. और ये सारा एक सिचुएशन जो है मोस्टली हमारी ट्रोपोस्फियर जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जा रहा होता है। So वो हीट जो कि absorb होगी by the soil, it is giving a warm temperature to the soil or that layer of atmosphere which is very close to the ground level. लेकिन ग्राउंड लेवल से जैसे ही हमने ट्रोपोस्फियर में स्टडी किया था कि हम ग्राउंड लेवल से जब ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसकी रीजन जो कि वो उसके गैसेस जो है वहाँ पर उनकी रेडिएशन बैक हो जाती है, जिससे कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। बट दिस एटमॉस्फेयर इज होल्डिंग दैट हीट, द मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ द हीट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही हैं, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो लेट्स सी कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। इन दिस डायग्राम वी कैन सी कि सन जो है इट इज सेंडिंग द सोलर लाइट और द हीट एनर्जी टू द अर्थ, और इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है इस सोलर लाइट का या हीट एनर्जी के वेव्स का हमारी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर जो है वहां पर मौजूद जो क्लाउड्स हैं या एटमॉस्फेयर और गैसेस की लेयर है, वो इसके एक बहुत बड़े पोर्शन को स्ट्राइक बैक कर देती हैं। लेकिन फिर भी एक प्रोपोर्शन जो है हीट एनर्जी का और सोलर लाइट का ये अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो वंस इट स्ट्राइक अगेंस्ट द ग्राउंड ऑफ द अर्थ, इट स्ट्राइक्स बैक अगेन इट वुड गो अप एंड इट वुड बी रिलीज इन द स्पेस, बट अ पार्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब बाय आवर ग्राउंड लेवल और द सॉइल जो है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, और रिजल्टेंटली हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो वार्म होना शुरू हो जाता है। बट स्टिल वो रेडिएशन का वो पार्ट जो कि अर्थ से स्ट्राइक करने के बाद रेडिएट बैक करता है, दैट पोर्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। सो देयर इज अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इन ट्रोपोस्फियर, और वो पार्ट जो हीट का जो कि स्ट्राइक बैक या रेडिएट बैक हो रहा है, दे विल अब्सॉर्ब दैट हीट एनर्जी एंड दे विल री इमिट इट बैक टू द अर्थ। सो इन दिस वे दो तरह से हमारी प्लैनेट जो है वो हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो वन इज द प्रोपोर्शन ऑफ द हीट व्हिच इज डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय दीस गैसेस एंड दे री-इमिट इट बैक टू आवर एटमॉस्फेयर। सो रिजल्टेंटली हमारी एटमॉस्फेयर का एक टेम्परेचर जो है वो उस रेंज में मेंटेन रहता है जो कि लाइफ की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। So mostly all over this planet, temperature would be moderate for the living organisms except certain regions which are present on equator and polar regions. Temperature की मेंटेनिंग के साथ साथ एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करिए अगेंस्ट द सोलर रेडिएशंस। वी नो कि सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मिक रेज एंड स्टॉर्म्स। वहाँ पे ऑल द टाइम देयर इज बम्बार्डमेंट ऑफ कॉस्मिक पार्टिकल्स, एंड दीज कॉस्मिक पार्टिकल्स दे आर ट्रेवलिंग along with the cosmic particles. They are different lights within the different range of wavelengths. For example, there are infrared light and UVs, extreme UVs. So they are traveling through the space and they are reaching our planet. But that barrier जो कि इन dangerous waves के और particles के और हमारी अर्थ के बीच में, that barrier is atmosphere. So it is a protective shield against all these radiations and cosmic particles.
सो फर्स्ट जो एक हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है दैट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड इट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर. स्ट्रेटोस्फीयर में भी हमने स्टडी किया था कि ओजोन की फॉर्मेशन ही इस तरह से होती है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर अब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. So they are broken down and then they recombine and make O3, which is ozone. So ozone is absorbing ultraviolet radiations and it is protecting the earth from extreme ultraviolet radiations. Same thing is happening in thermosphere as well. Thermosphere में भी जो gases हैं although कि उनकी density कम है but still वो ultraviolet extreme ultraviolet radiations को और एक जो storms हैं cosmic particles के उनको planet तक पहुंचने से रोक देते हैं. इसके अलावा जो रेज अब्सॉर्ब होती हैं दीज आर गामा रेज एंड एक्स रेज. सो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स दे आर स्टॉपिंग दीज एंड दे आर रेडिएटिंग बैक और दे आर अब्सॉर्बिंग दीज पार्टिकल्स एंड दीज रेज. तो अगर अनफॉर्चुनेटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और ये सारे कॉस्मिक पार्टिकल्स हमारी प्लैनेट तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाएं इन केस एटमॉस्फेयर इज नॉट एक्जिस्टिंग, सो दे वुड इंक्रीज द टेम्परेचर वेरी रैपिडली एंड दे वुड कॉज द म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स और एक लाइफ का जितना भी बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अंटिल कि वो स्टेज तक पहुंचती है कि पूरी लाइफ जो है वो डिमिनिश हो जाए अर्थ प्लैनेट पे. प्रोटेक्शन के साथ साथ देयर इज अ फिजिकल प्रोटेक्शन एज वेल because we know that there is a debris in our space और ये debris जो है it is made up of dust particles, small rocks, asteroids, meteors और ये सारा debris जो है इसकी formation उस वक्त हुई जबकि हमारी यूनिवर्स जो है वो जनरेट हुई और इसके साथ साथ भी if there is any collision तो debris और ये particles जो है वो जनरेट होते हैं और ये इसी स्पेस के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं. So during their movement they can make their course towards the earth, जिसमें से हम एक phenomenon जिससे हम बहुत familiar हैं, this is called as meteorite. तो meteorites का कौन जो है वो हमेशा से ही ऑब्जर्व किए जाते हैं. उनमें से मोस्टली जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर से पहुंचते ही खत्म हो जाते हैं और बहुत ही रेयर कोई ऐसा एग्जांपल है कि कोई मीटेराइट या मीटियर जो है वो हमारे प्लैनेट तक की सरफेस तक पहुंच सका. So there is 100 ton of space debris which is striking our earth every single day. तो assume कि अगर ये 100 ton का debris ही अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाए so there would be no life left on the earth. So atmosphere is providing physical protection against all these debris. उसमें होता ये कि जब ये पार्टिकल्स और रॉक्स और मीटियर्स हमारी एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं बिकॉज एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस, तो उनकी स्पीडली मूवमेंट की वजह से और गैसेस के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होती है उस फ्रिक्शन के रिजल्ट में ये पार्टिकल्स स्ट्राइक बैक हो जाते हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सिमिलरली इसी तरह से ये मीटियर्स भी डिस्ट्रॉय होकर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो कि किस तरह से हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो एक मीटियर को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से प्रोटेक्ट करती है. So that's how we are safe from asteroids and meteors. We know evolution जो है हमारी प्री हिस्टोरिक लाइफ इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर उसमें डायनासोर्स की जो एक्सटिंक्शन होगी हमारी बायोम में से इकोसिस्टम में से उसमें से जो थ्योरीज प्रेजेंट की जाती हैं उनमें से वन थ्योरी इज मीटेराइट. तो मीटेराइट बम्बार्डमेंट जो है उसने डायनासोर्स या उस वक्त के जो मेजर रेप्टाइल्स से द लार्ज रेप्टाइल्स उनको बिल्कुल एक्सटिंक्शन के पॉइंट तक ले गए और सिर्फ चंद एक ही स्पीशीज जो थी वो उस वक्त सर्वाइव कर सकी रेप्टाइल्स के ग्रुप में. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एटमॉस्फेयर. द अदर बेनिफिट ऑफ एटमॉस्फेयर दे आर कंट्रोलिंग द वेदर एंड द वाटर कंटेंट इन आवर बायोम्स. सो हमने कंपोजिशन ऑफ अर्थ में ये स्टडी किया, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में ये स्टडी किया था कि 0 से लेकर या 0.2 से लेकर 4% तक वाटर वेपर्स जो हैं हमारी एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं. सो इस तरह से हमारी एटमॉस्फेयर तकरीबन 12,900 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर इज होल्डिंग दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एनी गिवन टाइम एंड these water vapors or the water particles which are present in our atmosphere they are responsible for water cycle. अब वाटर साइकिल में ये कैसे रोल प्ले करते हैं इसको हम वाटर साइकिल के मॉड्यूल में स्टडी करेंगे. बट वी नो कि जितनी भी प्रेसिपिटेशन है चाहे वो स्नोफॉल होगी चाहे वो रेनफॉल होगी और वो क्लाउड से आती है और क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए इन वाटर वेपर्स का एटमॉस्फेयर में होना बहुत जरूरी है. सो दे आर होल्डिंग दैट वाटर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मॉइस्ट क्लाइमेट और मॉइस्ट वेदर. सो अदर देन इट they are transferring water vapors from the oceans to the drier areas because atmosphere is a fluid. तो gases जो हैं वो move करती हैं और higher density of water vapors which is around the oceans or any water body वो उनको वहां से लेकर ट्रांसफर करती हैं उन एरियाज में जहाँ पे कि इनकी डेंसिटी या जो होगी वो कंपैरेटिवली कम होती है. So they are distributing water vapors all over the world.
वाटर के साथ साथ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड करंट्स जनरेट होते हैं हमारी गैसेस के मूवमेंट की वजह से, और ये विंड करंट्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं वेदर कंट्रोल करने के लिए. वी नो वी आर फेमिलियर विद द विंड स्टॉर्म्स एंड वी नो दे आर कंट्रोलिंग द वेदर कंडीशंस इन एनी इकोसिस्टम. सो फ्रेंड, फाइनली हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है. अब हमारा स्टेप है एज यूजुअल अपनी रीडिंग पर आ जाते हैं. एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी of life on earth, as we know that the moon and Mars are inhabitable due to lack of atmosphere. So, due to lack of atmosphere provides certain benefits such as temperature, thermoregulation, protection against radiations, protection against space debris, meteoroids, etc. Atmosphere contains gases which absorb energy from sun. This absorbed heat is conducted to the whole planet with air currents. The presence of greenhouse gases, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, are responsible for global warming and resultant climate change as a result of human activity. Atmosphere serves as a protective shield against cosmic rays and radiations coming from space. Solar VU radiations are blocked by the ozone. Gases also absorb cosmic rays, gamma rays and X-rays. These are harmful mutagens which cause mutations in the genomes of inhabitants of the Earth. The gases present in the atmosphere also provide protection against space debris. These debris are usually burnt to ash before reaching Earth's surface due to friction between gases and the falling debris. ठीक है, उसके बाद atmosphere also serves as a reservoir of water as at any point is holding approximately 12,900 cubic kilometers of water. This water is used in the water cycle moving between land and oceans. The winds control the weather and also disperse heat across the globe. In this lesson, the students will learn about benefits of atmosphere, thermal regulation, protection against space radiation, protection against space debris. डन हो गया सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमने पढ़ा भी होता नहीं. चलते हैं अपना पोस्ट असेसमेंट की तरफ से क्विज ले लेते हैं. Which is not to know about stratopause. Which is not true about meteors. Stratopause is boundary between dash and dash. Okay, done. चलते हैं हम आगे. हमारे यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, बेनिफिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर.
अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक नंबर 42, लेक्चर 42, कार्बन साइकिल। इसका प्री असेसमेंट ले लेते हैं। Heat is radiated into space in the form of infrared radiation. Proteolysis that occurs during purification results in release of nitrogen and carbon, nitrogen and magnesium, iron and carbon, nitrogen is phosphorus. Which is not true about photosynthesis. Sulfur oxidizers and reducers are examples of chemoautotrophs. All are correct. Thanks a lot. अब आगे चलते हैं। वीडियो को अच्छे सुन लेते हैं। One important feature of ecosystem is biogeochemical cycle. We know कि हमारी एटमॉस्फेयर में हमारी सॉइल के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिसाइकलिंग और साइक्लिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है. फॉर एग्जांपल उसमें कार्बन है, उसमें वाटर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. So we are familiar that these elements are very important components of organic molecules, and these organic molecules are making up all the living organisms including microbes, plants and animals. तो इन सारे एलिमेंट्स की इनका एक साइकिल जो है वो हमारे इकोसिस्टम के अंदर कंटिन्यू रहता है, और इन साइकिल्स को अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. सो द फर्स्ट साइकिल इज कार्बन साइकिल. कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमें मालूम है कि हमारी प्रोटीन्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, उन सब में कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनकी एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर. और ये सारे यूनिट्स जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसकी कंप्लीट और होल फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कार्बन. इवन कि एक ह्यूमन बॉडी का अगर हम वेट कैलकुलेट करें तो उसमें 20% वेट जो है वो सिर्फ कार्बन के मॉलिक्यूल्स का होगा, ये कार्बन के एटम्स का होगा बाय वेट. एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन in our atmosphere. So as composition of atmosphere में we studied कि carbon dioxide is an important component of atmosphere. So that is bringing that carbon for the living organism. तो हमारी atmosphere में तकरीबन 750 billion metric ton of carbon is present in form of carbon dioxide, and this carbon dioxide is available for plants, animals and microbes. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसको एज एन एलिमेंट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज नहीं कर सकता. सो वी कैन यूज इट ओनली इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके इसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक पार्ट बना देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बन fixation. So this synthesis of carbon containing organic compounds through the photosynthesis, they are the major source of food available in any ecosystem. So the plants, they are consumed by the animals, और animal in organic molecules को transfer कर देते हैं towards their consumers. And both plants and animals वो energy generate करेंगे by breaking down of these organic molecules. So respiration is that process which is breaking these compounds, these organic molecules, and it is releasing energy and other important compounds which are utilized by
the plants and animals. For example, water, and there are other adenosine triphosphate. So there are other components too. So respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है. So both plants and animals, they are releasing that carbon dioxide back into the atmosphere. तो plants carbon dioxide को consume करते हैं, लेकिन साथ साथ respiration के साथ वो respiration के process में carbon dioxide को atmosphere में भी release करते हैं. Animals can't utilize the carbon dioxide, but they are releasing carbon dioxide in atmosphere. So at the same time, वो organisms जो plants हैं, जो animals हैं, वो which are decaying, through the process of decomposition, they are releasing the carbon dioxide as well in our environment. Other than it, carbon dioxide जो है वो different natural processes या phenomenon के through भी release होती है. For example, volcanic eruption, that is a major source of release of carbon dioxide in our atmosphere. तो वो सारी carbon dioxide जो कि इस atmosphere में release होगी है, that is again available for plants to be consumed in photosynthesis. Terrestrial environment के साथ साथ aquatic जो ecosystem है वहाँ पर भी carbon dioxide is playing its role. So atmospheric carbon dioxide is being dissolved in water, और वहाँ पर water में dissolve होने के बाद ये bicarbonate ion में convert हो जाते हैं. We know, we are familiar with the carbonic acid. It's carbon dioxide, it reacts with water and it makes carbonic acid. But carbonic acid is an unstable acid, so it quickly breaks down into bicarbonate ions, and these bicarbonate ions are available for algae and other aquatic plants to be consumed for photosynthesis. तो dissolved carbon dioxide, bicarbonates या ऐसे carbonates जो कि solid form में, limestone की form में, ocean के bed में या sea के bed में they are stored. हमारे plants और animals उस carbon को utilize करते हैं for their consumption. Methanogens ये ऐसे microbes जो कि anaerobic respiration कर रहे होते हैं because their environment is oxygen free and they are respiring in that environment. So instead of releasing carbon dioxide, they are releasing methane. और ये methane जब air में release होती है तो it is oxidized in presence of oxygen and converted into carbon dioxide. So at the end respiration की जो end product होगी वो carbon dioxide है. So that's how atmosphere या nature और एक ecosystem जो है वो अपनी उस carbon dioxide को ये जो balance है उसकी consumption के बीच में और उसकी production के बीच में उसको cycling के through maintain कर रहा होता है. तो amount of carbon dioxide made by breakdown of these organic molecules through the process of respiration or through the process of decomposition is almost equal to the rate of consumption of carbon dioxide through the process of photosynthesis. तो ये जो balance है उसकी production में और balance है उसकी consumption में, this is very important. और किसी भी तरह का mismatch इन दोनों rates के बीच में it could bring a very negative consequences for the balance of life in any ecosystem. This is a brief summary of carbon cycle. Here we could see कि हमारी carbon dioxide atmosphere में that is the most important reservoir of carbon in our atmosphere. This carbon dioxide through photosynthesis is utilized by the plants. Through food chains ये carbon जो है animals को transfer हो जाती है, and once the animals they are dead, carbon would be transferred back to the soil through the process of decomposition. इसके अलावा हमारी soil में carbon, fossil fuel, coal, petroleum in के reservoir की form में या limestone जो होता है उसकी form में भी available है. So we could call it the stores or reservoirs of carbon. Aquatic ecosystem में oxygen, carbon dioxide enter होती है through the process of dissolution, and this carbon dioxide is converted into bicarbonates. In the dissolved oxygen, bicarbonates through the process of photosynthesis are utilized by algae and plants, and through the process of food chains, it is transferred to its consumers, which are animals. And again, through the process of respiration, carbon dioxide is released back to its environment. तो इस तरह से एक साइकिल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो चलता रहता है, and we can't say that there is a beginning point or there is an end point of carbon cycle. So this is extremely important
to maintain the balance of life in any ecosystem. सो फ्रेंड्स, हमारा कार्बन साइकिल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मतलब इसकी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। There is a reason why life on Earth is called as carbon-based life. Carbon is the main component of living organisms, and about 20% of human body is carbon by weight. Carbon dioxide is the major source of carbon, which is abundantly 740 billion metric tons available in the atmosphere. Plants during photosynthesis fix this carbon dioxide into organic compounds, which are then used by animals for biomass production and energy generation. During the process of respiration, carbon dioxide is produced and is released in the atmosphere, where it is again available to plants for photosynthesis. In aquatic ecosystem, the dissolved carbon dioxide reacts with water to form bicarbonate oils. These are then used by aquatic primary producers, algae and marine plants, for photosynthesis. Certain bacterial species known as methanogens are capable of producing methane gas instead of carbon dioxide during their respiration. Oxidation of methane yields carbon dioxide. The amount of carbon dioxide produced during the breakdown of organic matter almost matches the amount used in the photosynthesis. Small mismatches can have greater and far-reaching consequences such as global warming and climate change. In this lesson, the student will learn about carbon cycle. So, हमारे पास अब लास्ट स्टेप है इस टॉपिक का, वो है प्रोसेस असेसमेंट। इसको भी ले लेते हैं। Dash cause greenhouse effect, nitrous oxide, carbon dioxide, methane, और methanogen produces dash instead of carbon dioxide, methane. Dash percent of human body is carbon by weight. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज responsible for the life sustaining on the earth. So life depends on the presence of water,
किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को, माइक्रोब को अपने डेली एक नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वाटर की बहुत क्रिटिकली जरूरत होती है. So water is present in our ecosystem in form of different kind of water reserves and even in form of water vapors and solid or the frozen form. So कोई भी adult human body, for example, it is made up of 60% the body weight of any adult human body is the water. So water is a compound which is naturally present, but at same time इसके synthesis जो है वो भी होती रहती है in life processes. For example, water is a byproduct of aerobic respiration. So जिस पर हमने अभी बात की थी कि aerobic respiration जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एंड प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है, सिमिलरली वहाँ पर वाटर जो है एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो रहा होता है. So those animals and plants which are consuming the organic molecules, they are producing the water molecules in their body, but at same time they need this water from their environment as well, which they do through the process of drinking. So water की synthesis के साथ साथ there is a breakdown of water as well, and it is happening in the process of photosynthesis. So water इतने important component होने की वजह से इसकी एक fixed एक amount है या fixed volume है on the planet Earth. So there is important कि ये water जो है वो recycle होता रहे और एक cycle के form में जैसे कार्बन साइकिल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता रहता है, तो similarly there is a water cycle is also functioning in our ecosystem. So in this water cycle there is a rate of synthesis and breakdown is equal. और ये एक बैलेंस जो है रेट उनकी रेट ऑफ सिंथेसिस में और रेट ऑफ ब्रेकडाउन में सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ. सो द वाटर साइकिल को हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ स्टेजेस के अंदर, एंड वी विल स्टडी दीज फेजेस और स्टेजेस वन बाय वन. द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर साइकिल इज इवेपोरेशन. सो वी आर फेमिलियर विद इवेपोरेशन. इट इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एनी वाटर बॉडी, और वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं. सो वी नो कि कोई भी ऐसी जो वाटर बॉडीज हैं जिसमें ओशंस हैं, सीज हैं, या फिर देयर इज अ फ्रेश वाटर बॉडीज, लेक्स एंड रिवर्स, वहां पे कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता रहता है, एंड दैट वाटर इज मूविंग इन टू द एटमॉस्फेयर. सो दिस वाटर is evaporating and it is maintaining that important component of our atmosphere in a form of water vapors, जिसको winds जो हैं वो फिर एक place से drier places की तरफ ले जाती हैं. So during the process of evaporation, impurities are left behind. So because only H2O molecules are evaporating, so if there is any other impurity, any other gas, any other mineral or any chemical, or maybe कि उसमें soil के particles हों जो water के अंदर dissolve हुए हैं, they would remain in the same water body, और सिर्फ H2O in a form of vapors it would be evaporated. So the water जो कि फिर evaporation के through हमारी atmosphere में जा रहे हैं, those water vapors are purely and very clear or clean water molecules. The next stage is condensation. Evaporation के बाद अगली phase में जब water vapors हमारी gases में, हमारी air में मौजूद हैं, so the next step is condensation, condensing of these water vapors. It is opposite to evaporation. अब gaseous form से water जो है वो liquid form में transfer हो जाता है. So through the process of condensation, it is transferred into small water droplets. So the small water droplets, they are combined together and they remain suspended in form of different particle sizes, और उसी एटमॉस्फेयर के अंदर ये मेंटेन रहती हैं और विंड के थ्रू मॉइस्ट एरियाज से ड्राई एरियाज की तरफ मूव करते रहते हैं. बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं, दे वुड फर्दर क्लस्टर टुगेदर, और फिर ये क्लाउड्स और फोग जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं. इन द स्काई एट द हायर एल्टीट्यूड दे विल फॉर्म द क्लाउड्स, और क्लोजर टू द ग्राउंड लेवल दे विल मेक द फोग. इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. तो वेदर और टेम्परेचर जो है वो इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा होता है. सो द कंडेंसेशन के बाद अगली जो स्टेज है दैट इज प्रेसिपिटेशन. वी आर फेमिलियर विद प्रेसिपिटेशन. इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल. सो एक राइट टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशंस के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स विच आर क्लम्प्ड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ये लार्जर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, और ड्रॉपलेट्स का साइज ज्यादा होने से उनकी डेंसिटी और उनका वेट इंक्रीज कर जाता है. रिजल्टेंटली हमारी एयर जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाती. इट्स नॉट प्रेजेंट और सस्पेंडेड. जब सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं रह सकता, इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन और मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड दैट इज कॉल्ड रेनफॉल. सो द रेनफॉल इट फॉल्स टू द अर्थ, और अर्थ सर्फेस पे पहुंचने के बाद इट विल स्टार्ट रनिंग ऑफ. और जितना भी वाटर बारिश के बाद या स्नोफॉल के बाद, उसकी स्नो की मेल्टिंग होने के बाद इट विल स्टार्ट रनिंग ऑफ. सो द नेक्स्ट स्टेज ऑफ वाटर साइकिल इज सरफेस रन ऑफ. तो वो जितना भी एक प्रेसिपिटेशन से वाटर आ रहा है वो फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द लोअर एल्टीट्यूड. सो इट्स वी कुड से इट्स अ डाउनहिल मूवमेंट ऑफ एनी फ्लूइड. तो ये डाउनहिल मूवमेंट के बाद इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सी लेवल, और ये स्ट्रीम्स और रिवर्स और पॉन्ड्स या लेक्स की फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, या फिर ये रिवर्स का हिस्सा बनते हुए, एंड अल्टीमेटली के रिवर्स दे फॉल इनटू द ओशंस. Small streams, they flow into the larger streams, and then they make rivers, and eventually that water flows into the oceans. So this is a part of surface runoff. It is an important part of water cycle because water is returning back to the oceans and seas. जैसे कि evaporation में सबसे ज्यादा जो surface area है वो oceans और seas का है, इसलिए वहाँ पर भी evaporation rate सबसे highest है. तो वो water जो उस sea से और ocean से lose हो गया, and it is transformed into the water vapors. Now through this process of surface runoff, it is going back towards the oceans and seas. तो यूँ वहाँ पर water की deficiency नहीं होती, जितना भी water evaporate होता है वो runoff के through precipitation और फिर runoff के through दोबारा से oceans और sea में वापस पहुँच जाता है. हमारी वीडियो जो है होगी है कंप्लीट. हम लोग चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ.
needed water to survive. Adult human body contains 60% of approximately 60% of water by weight. Water in nature can be synthesized as in aerobic respiration and gets broken down in photosynthesis. Water cycle is the movement of water between oceans and land. The first stage of cycle is the evaporation of water from any water body on land and oceans due to sunlight and temperature. In evaporation, water transitions from liquid state to gaseous state. This purifies the water of any impurities, salts and minerals, pollution, etc. The second stage is the condensation of water vapors to form clouds and foam. The tiny water droplets present in the clouds join together to form large droplets under specific temperature and pressure conditions and result in third stage of the cycle, the precipitation. As the rain fall to earth, much of the water reaching to the earth's surface moves downhill into streams, rivers, ponds and lakes, eventually reaching the oceans and the last stage of the cycle known as surface runoff. In this lesson we'll learn about water cycle. डन हो गया। वो हमारी पोस्ट असेसमेंट रह गई है, वो भी ले लेते हैं। -% of human body is carbon by weight. Methanogens produce -% of carbon dioxide. Okay, when water changes from gaseous state to liquid state, this is known as condensation.